Hello and welcome. Good evening. Hope you guys are doing well. Last week we, closed with abrupt technical fault, and a lot of questions of even mine got unanswered. I was wondering what has happened, but there was a technical glitch in the system, and furthermore, nothing could be done on that. So my apologies for the last week. I came prepared to answer your questions, but nothing happened on that front. So let's start this weekend stock market के बाद MJ के साथ, and this time is going to run smooth. Of course, we are using a direct YouTube live video this time, and you know, it's for a couple of weeks before we start using another third-party software for broadcasting, right? What is most important is आपके सवालों के जवाब आपको मिलने चाहिए हैं, and that's been what is my endeavor to do, right? So let's look at from a perspective of where the market has been in last, I cannot say now 1 week, right? Almost 2 week हो चुके हैं, right? So last 2 week back, if you see, the market was somewhere at 17,397. That was the last week. This Friday, market ended up 17,698. रफली अगर हम बात करें तो 300 पॉइंट का जंप लिया मार्केट ने एक वीक में. अनफॉर्चुनेटली ये वीडियो में मेरे पास में शेयर करने के लिए चार्ट्स या डेटा नहीं रहेगा, सो यू वुड बी सीइंग मी लाइव बट आई विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चंस. ठीक है. So almost you can say now the market is only 906 point below the all-time high. All-time high क्या था? 18,604 का all-time high था, right? Now, अगर हम बात करें in terms of percentage, the market is just 5% down from all-time high, right? So you can say also, those of you who understand what is a distribution zone, now market is in close to distribution zone. So those of you who are already in good part profit book करने की तैयारी करिए. और ऑफ कोर्स अगर मार्केट वो जोन तोड़ के मतलब 604 तोड़ के और ऊपर जाता है तो डेफिनेटली यू कैन टेक री एंट्री, बट मोस्ट ऑफ द time in distribution zones, market corrects, consolidates for a little longer period, gathers strength to break the level, right? So वो perspective से अगर हम देखेंगे तो yes, time to book part profit, right? And nobody has become poorer by booking the profits. अगर बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी क्लोज्ड एट 39,042. ऑल टाइम हाई था 41,830 का. सो रफली 6.7% डाउन है ये ऑल टाइम हाई से. नॉट अ बिग मूव, राइट? इफ यू रिमेंबर some 5-6 weeks back, we were somewhere around, bank nifty was around 22% down from all time high, and nifty was 18%, and that's the time I had asked you to start buying staggered manner में कैसे करते हैं? थोड़ा थोड़ा करके आप स्टॉक खरीदना चालू करते हैं उसमें, राइट? So that's what was a buying strategy for at that point of time. Nevertheless, that opportunity is gone, and you know that when the market reverses, it doesn't tell anybody it's reversing. Now let's look at some macros and micros of this market, right? GST collection जुलाई का एवर हाईएस्ट है 1.49, जून का 1.446 था. लास्ट 12 मंथ से जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ के हाई हो रहा है, 1 लाख करोड़ के ऊपर है. सो दैट्स अ गुड न्यूज. दैट मींस बिजनेसेस आर डूइंग वेल. अगर एडवांस कॉर्पोरेट टैक्स की बात करेंगे, क्वार्टर 1 का एडवांस टैक्स वाज मच मोर, आई थिंक 1.01%, लाख करोड़ इन कंपैरिजन अराउंड 75,000 करोड़ का था पिछले सेम करस्पॉन्डिंग पीरियड में, राइट? एक साल पहले. सो दैट इज अ गुड ग्रोथ ऑफ एडवांस टैक्सेस. नेट डायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे, इवन नेट डायरेक्ट टैक्सेस में देयर इज अ वेरी गुड ग्रोथ, राइट? सो Q1 FY 22-23 के मोर और लेस रिजल्ट्स आ गए हैं, एंड द रिजल्ट्स आर गुड टू ग्रेट. सो वहाँ पे भी ऐसा कोई सेटबैक नहीं है इंडस्ट्रीज को. इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी चल रही है.
On top of that, if you see, even the World Bank has said there is no risk of degrowth to Indian economy, and growth will happen. Only not only that, a 6.5 or 6.6% का growth होएगा. So that's a good news for the people who invest in the economy of the country. Now, if we look at monsoon is doing great, right? Monsoon का कोई issue नहीं है. So that's also very important for Indian economy. So वो भी अच्छी news है हमारे पास में. अच्छा, किसी भी कंट्री में एक्चुअली ग्रोथ हो रही नहीं, वो कहाँ से देखते हैं? मोस्टली हम देखते हैं आईआईपी से, देन ऑन टॉप ऑफ दैट वी सी फ्रॉम द पावर कंजम्पशन से, क्योंकि इंडस्ट्री चल रही तो पावर कंज्यूम हो रही है. पेट्रोलियम कंजम्पशन से भी हमको पता चलता है ग्रोथ हो रही है. अगर ज्यादा पेट्रोलियम कंजम्पशन हो रहा है तो दैट मीन्स इंडस्ट्रीज आर रनिंग एंड दे आर ग्रोइंग, दे आर रनिंग मोर. इफ यू सी इन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टील कंजम्पशन, क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, बिल्डिंग्स बन रहे, तो स्टील कंजम्पशन बढ़ता है. सो दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट. सीमेंट का कंजम्पशन अगेन अनदर फैक्टर टू सी द ग्रोथ. ऑटो प्रोडक्शन का data. So all these are rising month after month. So again, that gives you indication that your economy is growing, consumption is growing, right? So previous month के comparison में these numbers have been increasing. So that's worth celebrating for all of us, right? India weeks की बात करें, that is a fear gauge. In most of my conversation, I want to talk about India weeks. So India weeks as and when goes down, that means market में लोगों का confidence जम रहा है. The people are not so scared of investing. So if you see 4 weeks back, it was at 21.25, and now it closed on Friday at 16.55, right? A good a downside of 25% on fear. So that is again a good news. Nifty ka P is around 20.73. Now there is a very important aspect I would like you to know here, right? अगर हम यही पीरियड एक साल पुरानी बात करें तो आई थिंक दैट टाइम निफ्टी पी वाज समवेयर अराउंड 35 36, उसके ऊपर 40 तक भी चला गया था, राइट? व्हाइल एज द निफ्टी वाज समवेयर अराउंड एट 18,000, right? But now at 18,000, Nifty P is still very affordable at 21 or 20.5. So what does that show now? Let's conclude from that, right? That shows the price earning ratio, right? PE of Nifty is all, जो 50 स्टॉक है निफ्टी के, निफ्टी 50 में, उनका PE कम है, मतलब वो सस्ते में अवेलेबल है, right? Despite market being at the same place. So obviously that gives an investor an opportunity to invest more. And you would see last few weeks FIIs have become regular buyers, right? It's the almost more than 2.5 lakh crore they withdrew in a roughly in a year's period from Indian market. Now they've started coming back. Now just think at 17,500 17,700 के लेवल पे भी I think Friday का ही डेटा 2,000 crore plus का था FIIs का buying का. So obviously the market is the investors, FPIs, FIIs, they've got a lot of trust in Indian market, right? They're coming back. Obviously, because of that, the rupee becomes stronger, and rupees का market का inverse का dollar का market का inverse का proportion है. मतलब dollar नीचे जाएगी तो market ऊपर आएगी. That is also happening at present, right? So that's great. Now, if you see Friday का, although SGX Nifty we always talk about, it's a little deceptive sometimes. तो फ्राइडे का जो फ्राइडे नाइट का SGX निफ्टी का डेटा है, दैट इज 17,882. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द करंट मंथ फ्यूचर ऑफ SGX निफ्टी, राइट? सो निफ्टी जो SGX में डॉलर में ट्रेड होती है. नाउ विसा विस इफ यू सी आर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हैज closed at 17,782. That means roughly 100 point का एक गैप है. ऑफ कोर्स द मार्केट इज क्लोज नाउ फॉर 3 days. सैटरडे संडे मार्केट ऐसे भी क्लोज रहती है, मंडे 15 अगस्त के लिए क्लोज रहेगी. सो ट्यूसडे जब भी मार्केट खुलेगी, इफ देयर इज नथिंग ड्रास्टिक हैपेंस, एटलीस्ट टू कैच अप विद SGX Nifty, you would see market would be having a gap up of 75-80 point or maybe up to 100 points. So keep a watch on it, what is happening around you. If you look at
फ्राइडेज मार्केट्स, लेट्स से इंटरनेशनल मार्केट्स अगर हम फ्राइडे का देखें फ्रेंड्स, तो वहां पे भी काफी अपसाइड देखने को आई. इनफैक्ट अगर आप देखो SGX, निफ्टी, बैंक निफ्टी, apart from that Nikkei, FTSE is a FTSE London, CSE France, S&P 500, Dow Jones, they all have come above 200 days moving average. That means even these indices, international indices, are going on a long term bullishness, except I think Nasdaq, which is still trading below 200 days moving average. Obviously काफी पिटाई हुई है IT कंपनीज की, सो वहां पे एक थोड़ा 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे है. अदरवाइज ऑल द इंडाइसेस आर ऑन above the 200 days exponential moving average. So that's again another method of watching out, or weighing on the markets, how whether they're bullish or bearish or what, right? So ये एक aspect है. If you see US markets overall, they are recovering, right? Now Russia and Ukraine के war को almost market ने discount कर दिया है. So and also there are certain development, right? तो Russia has agreed कि जो food grain है यूक्रेन का, उसको बहाल किया जाए, मतलब food grain की export हो सकती है. So at least like food grain की supplies जो अगर आप देखोगे ये war के बाद में यूरोप में काफी कॉस्ट एस्केलेट हो गई थी, इन्फ्लेशन काफी बढ़ गया था, तो थोड़ा एक चांस है. ऑफ कोर्स एनर्जी की कॉस्ट अभी भी वही है, क्योंकि रशिया इज नॉट सप्लाइंग नेचुरल गैस टू, और इट हैज रिड्यूस्ड सप्लाई टू European countries, especially Germany, and those countries which were trying to be friendly with Ukraine. So वो एक cost अभी भी escalated है यूरोप में. That's only negative aspect of it. Oil prices $120 चार पांच हफ्ते पहले ट्रेड कर रहे थे, वहां से अभी आ गए हैं $100 पे. That is again a good news, right? So this one aspect. अभी क्योंकि ऑयल प्राइसेस धीरे धीरे नीचे आ रही है, तो इंडियन गवर्नमेंट हैज आल्सो रिवाइज्ड द विंडफॉल टैक्स ऑन ऑयल कंपनीज. दैट मींस रिलायंस एज वेल एज ONGC, जो एक्सपोर्ट करते हैं अपना क्रूड, राइट, और रिफाइंड पेट्रोल और पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स, राइट. US inflation has been now reducing from 9.1 to 8.8 to 8.5. ये last month का data 8.5 का, right? So that's good. However, US की GDP has of course shrunk. In previous quarter it shrank by 1.6%, and the last quarter की quarter 2, जो कि हमारे लिए quarter 1 होता है, US के लिए quarter 2 होता है, that shrank by 0.9%. So technically अगर बात करें तो US is already in the recession, but yet the market is gung-ho about it, because market is always looking at future values. Now future value क्या कहती है कि future में inflation और कम होएगा. That means people will be investing more and more, right? People will be saving more and more, right? Fed की जो last meeting हुई थी 27 जुलाई में, they increased the interest rate by 0.75%, and in fact I remember May June में भी 0.75% से उन्होंने अपना interest rate बढ़ाया था. Effectively, I think they may further increase it by 0.5, 0.75%. Overall, they would like to have the interest rate at somewhere around 3.5%. That's the only way they can, decrease their inflation, which is, 41-year-old high pay, and they need to bring it down to 2.5 to 3%. So they will need to further tighten their monetary policies. Interest rate बढ़ाना उनकी मजबूरी है, and although that may have time to time negative impact, but that will not create a fall, but it may create a correction in the market. So those of investors who know how to pick up value picks from the market, they will always have the opportunities, because whenever these kind of things will come, market will show corrections. RBI has been very, very accommodative in its commentary, and I think they might be preparing for next hike of 0.4 or 0.5% in the interest rate, right? हमारे यहाँ पे भी interest rate काफी कम है in comparison. A few years back, if you look at, we used to have 8%, 9%, even 10% interest rate we have seen. So as of now, 6.5 or 7% पे भी interest rate काफी कम होता है, right? Now you can say that जो एक worldwide fear of recession, that is subsiding a little, right? But at the same time,
you might see there are certain events which keep on coming up, right? Just say Nancy Pelosi was in Taiwan last week, right? And that was a high voltage drama. And now that has strangled the relationship between US and China much more. So again, a new dynamics, new geopolitical environment gets created, and that may also give some jerk to the market. So you need to be careful. It's not that will lead market to downside as much as it went at in 2008 or in 2020 or 2015, but a good correction of like 5-10% is good enough for the people to buy on dips, right? So right now market is buy on dips, right? So that's what is happening, friends, in the market. You should know that how the market is progressing, such that when you take positions in right sectors, right? Auto sector is booming up right now. We thought pharma will pick up, but pharma is again another cyclical industry. It is not picked up, so still in a downside. अगर बात करेंगे मेटल सेक्टर की, we've been 5-6 months back, people have been talking about super cycle for metal. My opinion was that there is no super cycle, so I ended up booking my profits in metal sector, in companies like Tata Steel, Jindal and all. So after that, I haven't seen the new highs. Of course, it came down, corrected very well around 28% ke aaspas mein, and again it is going upside. But I think upside in metal will be limited. So that's my personal view, based upon which I'm doing my own investments, right? So you also need to make up your mind about the industries, about the sector. Of course, consumption is evergreen theory or evergreen theme, which keeps on going. But again, with what kind of stocks you pick up in that matters, right? Now you see, um, वो आईटीसी जिसके बारे में लोग बात करना पसंद नहीं करते थे, वो आईटीसी एज ऑफ नाउ ट्रेडिंग एट अराउंड 310 rupees, right? It used to be around 205, 210 few months back. So you need to be very smart in picking up the stocks, right? Great. So I hope you got a view about the market and geopolitical scenario, macros, micros, and the technical aspect of it. हाँ, technical aspect से मेरे को याद आया, Nifty as well as Bank Nifty on a daily chart have created hanging man. Now we are close to distribution zone, friends, and distribution zone mein hanging man banna is a bearish sign. So I'm not saying there is a fall in the market, but there may be good corrections coming up, right? Market has heated up very fast in last few weeks, right? So let me start taking up your questions, and good evening to those of you who have joined a little late, right? ओके, सो नीलेश, किसका सवाल है? भास्कर का सवाल है, योर ओपिनियन ऑन यूपीएल लिमिटेड. लेट मी सी हाउ यूपीएल इज डूइंग, राइट? यूपीएल लिमिटेड. सो आज मेरे पास में जो चार्ट्स है ना, वो दूसरे स्क्रीन में है, और आई हैव टू सी एल्सवेयर टू आंसर योर क्वेश्चंस, ठीक है? लेट मी check the charts. Okay, UPL is now, again, UPL is reaching is a distribution zone 820 के आसपास में. You would see it has got a very strong resistance 800 850 के रेंज में, right? So if you are invested from lower levels of 600 plus, then you can continue and book your part profits at 850 के level. And only fresh positions you should create in UPL only after 900, right? अगर all time high cross हो जाता है तो उसके बाद में भास्कर you can take positions, right? As of now I would not say swing के लिए अभी इनिशिएट करो, क्योंकि अपसाइड अभी काफी लिमिटेड है और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा नहीं होएगा. और इफ यू आर क्विक एनफ, लेट्स से 788 से 727-25 के बीच में आपको लाइक 30-40 पॉइंट्स, मतलब 5% अपसाइड मुझे दिखती है, उससे ज्यादा अपसाइड अभी नहीं दिख रही, अनलेस अंटिल निफ्टी बैंक सॉरी निफ्टी क्रिएट्स अ ऑल टाइम हाई. अगर निफ्टी ने ऑल टाइम हाई कर दिया तो कोई इश्यू नहीं है, देन इन दैट केस वी कैन लुक फॉरवर्ड फॉर हायर प्राइसेस. प्रमोद जैन जी का सवाल है, रेन इंडस्ट्रीज एंड कावेरी सीड्स. रेन इंडस्ट्रीज आई थिंक नाउ हैज गिवन अ गुड
breakout rain industries today. I was checking it, but again मैं ये charts यहाँ पे पुराने वाले लगा नहीं सकता हूँ. Rain industries. Let me add some tools here, friends. You'll have to give me a minute because ये नए charts हैं और मेरे को इसमें tools लगाने जरूरी हैं. Right. ओके, सो रेन इंडस्ट्रीज में अगर आपको चाहिए, देखो एक डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे 210 के आसपास में एंड 196 पे ट्रेड कर रहा है. 182 183 के स्टॉप लॉस के साथ में आप इसको ट्रेड कर सकते हो. अपसाइड मेरे ख्याल से 250 के आसपास की अपसाइड रेन इंडस्ट्रीज में है. रेन इंडस्ट्रीज की काफी पिटाई होगी. इट्स अ वंडरफुल कंपनी, अच्छे फंडामेंटल से कोई इश्यू नहीं है, ठीक है. और अगर आप बात कर रहे हो 6 महीने का, तो 6 महीने में वेयर डू आई सी रेन इंडस्ट्री समवेयर अराउंड 280 290 के ऊपर. एंड डिस्क्लेमर है, मैं खुद भी रेन इंडस्ट्रीज में 160 150 के लेवल से इन्वेस्टेड हूँ. राइट. रही बात कावेरी सीड्स की. कावेरी सीड्स, इट यूज्ड टू बी ग्रेट कंपनी. लेट मी सी हाउ द फंडामेंटल्स हैव प्लेड अप नाउ. कावेरी सीड्स का फंडामेंटल देख लेते हैं. 11 का पी अच्छा पी है, 2 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, नॉट बैड. आरओसी आरओई 16 के ऊपर है, साउंड्स बी गुड. सेल्स ग्रोथ 6% की है 5 साल की, नॉट वेरी गुड. स्मॉल कैप कंपनी है, डिविडेंड यील्ड कुछ खास नहीं, आरओसी आरओई ठीक ठाक है, रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक है, प्रोमोटर्स होल्डिंग ठीक है. इंडस्ट्री के पी से हाफ पी पे मिल रहा है, दैट्स ओके. सो मोर और लेस आई कैन से अपने फेयर वैल्यू के आसपास में ट्रेड कर रहा है प्रमोद जी. सो इफ यू वांट यू कैन टेक, बट डाउन साइड मुझे यहाँ पे अभी इसने, देखो अगर आपको ये ट्रिपल बॉटम बनाई हुई है इसने और अपसाइड यहाँ पे क्लियर नहीं दिखाई दे रही, सेलिंग प्रेशर है. मेरे ख्याल से अगर आपको पोजीशन बनानी है 500 के ऊपर, 500 रुपीज के ऊपर इसमें आपको बुलिश साइन मिलेगा, एंड देन ओनली यू कैन टेक टारगेट फॉर 550 575 एंड 600 के लिए, तब ये टारगेट होंगे. बट एज ऑफ नाउ कावेरी सीड्स इज इन डाउन ट्रेंड, सो मेरे ख्याल से लॉन्ग मत लीजिए. अगर फ्यूचर में है तो आप शॉर्ट कर सकते हो बिंदास, क्योंकि ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम अगर टूटेगी ना, 4 टाइम्स बॉटम, 5 टाइम्स बॉटम, 5 टाइम्स 470 के लेवल पे ये आके गया है और हैंड शोल्डर बनाया हुआ है इसने. अगर आप टेक्निकल एनालिसिस समझते हो तो नॉट अ वेरी गुड साइन ऑन इट. Anushka Gupta ji, good evening. View on Tata Elxsi. That's a question from Manish. Tata Elxsi. Let me see Tata Elxsi. If you see from a value pickup perspective, okay, so momentum perspective, it's a very bullish Tata Elxsi, okay. So already 9000 के लेवल पे इसने और 9000 to 9400 के लेवल पे इसने ऑल टाइम हाई तोड़ा है. मोमेंटम ट्रेड है, वॉल्यूम ठीक ठाक है, कोई इश्यू नहीं वॉल्यूम का. सो इफ यू आर मोमेंटम ट्रेडर, यू कैन टेक पोजीशन हियर, राइट. बट करेक्शन का वेट करें तो मेरे ख्याल से 900 9300 9400 500 के आसपास में मिलता है तो इट विल बी वर्थ, क्योंकि नया हाई बनाया तो वापस ये नए हाई को क्रॉस करने का सोचे. इफ यू सी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ टाटा एल्क्सी फ्रॉम फेयर वैल्यू, राइट, मेरा इन्वेस्टमेंट करने का तरीका मैं फेयर वैल्यू देखता हूँ. इट्स ऑलरेडी रनिंग मोर देन 50 टाइम्स इज बुक वैल्यू. आरओसी आरओई ठीक है, 37 30 40 के आसपास में, 103 का पी पे ट्रेड कर रहा है. मेरे फिलोसफी से बाहर है. अगर मैं फेयर वैल्यू की बात करूंगा तो फेयर वैल्यू पर्सपेक्टिव से भी काफी कम फेयर वैल्यू है इसकी, तो मोमेंटम ट्रेडर के लिए ओके है, वैल्यू इन्वेस्टर के लिए ओके नहीं है ये स्टॉक, राइट. अनदर स्टॉक फॉर सी नाउ, टाटा एल्क्सी का सेक्टर कल एकदम अलग है, स्पेशली दे आर इनटू ऑटो मीडिया कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स, तो एग्जैक्ट पैरेलल मिलना पॉसिबल नहीं है. बट इफ यू आर लुकिंग फ्रॉम द आईटी पर्सपेक्टिव, आई एम
much more in favor of HCL technologies. I'm invested in that, and I have trust. Anytime you get it for 950, 900 is an excellent price for a target of 1500. So that makes a good around 40-50% का आपको margin देता है. That's good enough. So that's my view on uh, IT related, right? In AI industry. So AI industry, mein, Manish, I haven't studied any alternative for data LXC, right? DV's lab. Another question like DV's lab. So let me see whether I can check that out. DV's lab. DV's laboratory, right? So DV's laboratory tried to move up. Now that was more of a short covering move. So downside still continues in DV's lab. Your downside 3400 is your first target. Upside नहीं दिख रही है इसमें. 3170 is another downside in DVs. Okay. Now why I am saying it, if I can't share the chart with you because इसमें मेरे को फीचर नहीं पता कि वो अगर चार्ट शेयर करते हैं तो इसमें कैसे कर सकते हैं. I think by next week will be on third party app, so it will be easy for me to use the chart. Okay. So if you see the way these if you look at the chart of DVs, 4 candles were huge, right? That was on May, right? May 23rd, 24, 25, 26 की कैंडल देखे. उसके बाद में जो अपसाइड आई ना, वो बहुत छोटे छोटे कैंडल लेके आई. So those of you who understand what is a short covering, what is a long unwinding, so you can see that it's a more of a short covering rather than the uh, up move, right? So that gives you a sense of what is happening in DVs, right? और ये भी हो सकता है कि ये जो फॉल आया ना 30, कहाँ से फॉल आया था ये 3944 से 3 सर नो डिविडेंड तो 30 रुपीज का था, तो 30 रुपीज वाला डिविडेंड का फॉल नहीं है. सो इट्स बेसिकली अगेन फ्रेश शॉर्ट क्या करेंगे, थोड़ा जैसे मार्केट ऊपर जाएगी वहां से शॉर्ट करना चाहेंगे, राइट? सो दैट्स व्हाट इज बीन हैपनिंग. All right, so another question I have is from REC. So let me see what is happening in REC. RECLA, I think. REC Limited, right? So great. So REC, if you see, there is a split which is happening on August 17. So next week में होएगा 1.333 ratio 1. That means अगर आपके पास में 1.33 स्टॉक्स है तो आपको 1 स्टॉक मिलेगा, राइट? यू कैन से 1/3 रफली. तो अगर आपके पास में 10 स्टॉक है तो शायद 3 स्टॉक के आसपास में मिलेंगे. इट्स ऑलरेडी नाउ नियर द डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? 143 142 के आसपास में डिस्ट्रीब्यूशन जोन है इसका. बट द मोमेंटम इज वेरी गुड. द मार्केट इज बीन गोइंग अप विद द राइजिंग वॉल्यूम्स, सो दैट्स अ गुड न्यूज अबाउट इट. सो मेरे ख्याल से पहला टारगेट इसका 145 का 143 का रखना चाहिए. सेकंड टारगेट शुड बी अराउंड 150 एंड थर्ड टारगेट 165 के आसपास में हमारा REC के टारगेट होना चाहिए. तो दैट इज ऑन अ ट्रेड ऑन लॉन्ग साइड. बट जैसे ये स्प्लिट होएगा फ्रेंड्स, वो टाइम पर प्राइस रिड्यूस होएगी, क्योंकि स्प्लिट का मतलब क्या है, आपको वहां पे एडिशनल शेयर्स मिल जाएंगे, राइट? सो बेसिकली आपकी कैपिटल उतनी ही रहेगी, आपका इन्वेस्टमेंट उतना ही रहेगा, नंबर ऑफ शेयर बढ़ेंगे. टू adjust that to total same investment, they will have to reduce the price of. So it will not be considered as a fall, but it will be considered as a splitted price, right? So don't get scared of that. All right, so yeah, the next question is NEC, right? And sorry, NCC. Let's see, NCC Limited, right? इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है. हाल फिलहाल में 2 रुपए का डिविडेंड दिया, तो उसकी वजह से छोटा सा फॉल है. ऑल्दो अपसाइड क्लियरली दिख रही है, बट इसके फंडामेंटल्स अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे फंडामेंटल्स पे एनसीसी नहीं है. आई थिंक इसमें काफी प्लेज है. लेट मी सी द फंडामेंटल्स इसके, तो आपको शायद क्लैरिटी मिलेगी उसमें. राइट, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.71 पे ट्रेड कर रहा है. प्रोमोटर ओनली होल्डिंग 22%, 18% यहाँ पे प्लेज है फ्रेंड्स. सो
although promoters have bought 2.3% recently in last quarter, जहाँ पे कि 35 का इंडस्ट्री का पी है, ये 10.4 के इंडस्ट्री के पी में ट्रेड कर रहा है. So that some factors are good, some factors are bad. But what I don't like is if the promoters have pledged the shares, so that is not in favor of it. Now, also look at the debt to equity ratio. Always one important parameter for infrastructure companies. Up to 1 is fine, but एक से कम होना चाहिए. तो 0.23 है, ठीक ठाक है, कोई इश्यू नहीं है इधर. ROC, ROE, return on capital employed is 13% only, and return on capital on equity is 6%. That's again not a good sign. सेल्स 5 साल की 4% की ग्रोथ पे चल रही है, मतलब कुछ खास नहीं है, तो नो फॉर मी. इसके बदले में चाहिए तो आप KNR कंस्ट्रक्शन में डाल दो, L&T. इफ यू वांट टू प्ले आउट ऑन अ इंफ्रास्ट्रक्चर थीम, आई थिंक दैट कुड बी बेटर थीम. L&T infra, L&T, Larsen and Toubro, as well as your KNR construction. ठीक है, so that's my view on that front. Another question comes, persistent. मनीष का सवाल है persistent का. Let's say SC fundamental देखते हैं ना, persistent. So I think मनीष persistent system का बात कर रहे हो ना? Persistent, एक ही है persistent के नाम पे. Right. So again, you may not be agreeing to what I'm talking about. Okay. Again, perspective अलग अलग हो सकते हैं. मेरा पर्सपेक्टिव है कि मुझे जो भी स्टॉक मिले फेयर वैल्यू से नीचे की प्राइस में मिले. क्या ऑल टाइम हाई पे ऐसा पॉसिबल है? यस, देयर आर सर्टेन कंपनीज अवेलेबल, बट most of the companies would have also run up to all time high, right? Or they would be close to it. So कई बार क्या होगा, अब आपको वैल्यू पिक कम मिलेगी. स्पेशली जो रिनाउंड कंपनीज हैं, जो मीडिया में बहुत ज्यादा कवरेज में, उन कंपनीज में तो डेफिनेटली आपको वैल्यू पिक नहीं मिलने वाली. 441 की बुक वैल्यू, इट्स ऑलरेडी ट्रेडिंग लेट्स से 10 टाइम्स. मेरे हिसाब से महंगा है. स्टॉक पी 38 की है, इंडस्ट्री की पी मोर और लेस उतनी ही है. ROC, ROE अच्छा है. आईटी कंपनीज का ROE, ROC 20 के ऊपर रहता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है. सेल्स ग्रोथ जनरली इनकी 2 डिजिट में है, वैसे ही प्रॉफिट ग्रोथ 2 डिजिट में है. Alright, so it's a trading 2 times is a fair value, right? So अगर मेरे से आप बात करेंगे तो I would prefer around 2000 rupees or less than 2000 rupees में ये स्टॉक को. बट क्या ये वहां पे आएगा? I don't know, right? But technically देखते हैं. Systems, right? NSE. Yeah. So it has given a buy on technical grounds, but 4000 पे इसको भयंकर रेजिस्टेंस है. लास्ट टाइम ऑल्सो इट मेड अ शूटिंग स्टार and we saw the sellout. IT sector itself is still struggling, right? Mostly Europe and America इनके clients हैं. अगर वहाँ पे recession है, अगर वहाँ पे डिग्रोथ में चल रही है कंट्रीज, तो उनका बजट भी कम होएगा. उनके डिग्रोथ में क्यों जाएंगे? इंडस्ट्रीज नहीं ग्रो करेंगे, तो where from they will bring more money to give bigger business to these IT companies. So on that front, you need to choose a company which is also having their presence in India or in growing economy, wherein they have more exposure here, less exposure there. So in that case, yes, you could be, you could be trying to swim against the stream, but your swim may still be worth. But बाकी के केस में you need to really keep on looking at your technical levels, right? Consistent 2-digit growth अगर कोई IT कंपनी कर रही है, it's good for them. बट बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन मत करें IT सेक्टर से, एटलीस्ट कम से कम अगले 6 महीने के लिए. योसेफ साहब का सवाल है सेल का. लेट्स से सेल, आई थिंक सेल हैज गिवन अ लॉन्ग एंट्री. ओनली थिंग इज अगेन, एज आई सेड, metal sector, I'm not super bullish now. Okay, you need to be careful in metal sector. cyclical sector है, आप लेके फंस जाओगे. 2-3 साल तक बैठ जाता है ये सेक्टर, तो you need to be very careful. As of now, sale is concerned, as of it has given a good breakout here.
राइट। तो पहला टारगेट इसका 81 पे, 81.5 पे, अगर आप 80 पे खरीदते हो तो 87 का पहला टारगेट है, सेकंड टारगेट है 98 का, और थर्ड टारगेट है 112 का। मेरे ख्याल से 112 की जर्नी कवर करने में सेल को डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, उसके लिए साइकिल है या नहीं है। आपको याद है स्पेशली टाटा स्टील, सेल, जिंदाल, ये सब बीच में काफी गिरे थे बिकॉज गवर्नमेंट ने स्टील के एक्सपोर्ट पे टैक्सेस लगा दिए थे, कई जगहों कई चीजें बैन कर दी थी, राइट। तो ऑब्वियसली ऐसे में जब उसका फ्यूचर ग्रोथ दिखाई नहीं देता है तो लोग क्या करेंगे, स्टॉक बेचेंगे। दैट वाज अ टाइम, सेल वाज अ वेरी गुड प्राइस एट 65 to 70 rupees फ्रेंड्स, राइट, एंड इट वाज वैल्यू पिक एट दैट टाइम। अच्छा, दूसरा अच्छा डिविडेंड अच्छा देती सेल, राइट। आई थिंक 8-10% का तो डिविडेंड देती। फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट्स गुड, यू कैन स्टिल टेक पोजीशन, टारगेट आई हैव ऑलरेडी गिवन। हैप्पी माइंड व्यू, हैप्पी माइंड के बारे में मेरा व्यू शुरू से अच्छा है, बट वैल्यूएशन अभी बहुत ज्यादा है। नहीं आ रहा है, क्या हुआ? यस, हैप्पी माइंड नहीं भाई, हैप्पीएस्ट माइंड्स है, ठीक है। मनीष थोड़ा, मतलब मैं ही फिर जाऊंगा नहीं तो, अगर आप ऐसा करोगे तो, ठीक है। सो नाउ अगेन ऑल IT companies are going through the same phase. Even happiest mindset also is doing the same. एक थोड़ा ग्रोथ आया, डिस्ट्रीब्यूशन जोन में गया, सेल आउट आया, शूटिंग स्टार बनाया, और उसके बाद में अभी ये क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब स्ट्रेंथ बना रहा है ऊपर जाने के लिए, ठीक है। नाउ लेट्स सी फंडामेंटल्स। 20 टाइम्स ट्रेड कर रहा है, 20 टाइम्स, 21 टाइम्स और 22 टाइम्स, आई थिंक 21.5 टाइम्स प्रिसाइजली। मेरे फिलोसफी से बाहर है, ऑल दो आरओसी, अब आरओसी आरओई बहुत अच्छे, कोई इश्यू नहीं है, सेल्स ग्रोथ ठीक ठाक है। फेयर वैल्यू के हिसाब से ऑलरेडी 3 टाइम्स देन फेयर वैल्यू ट्रेड कर रहा है। विल आई बाय? नो। कैन यू बाय? यस। मोमेंटम ट्रेडर हो आप, डेफिनेटली ले सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 1200 रुपीज, ठीक है। नेहा जी का सवाल है, सर व्हाट विल बी द एंट्री लेवल फॉर आईटीसी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? सो नेहा जी, यू हैव मिस द बस। आईटीसी में ऑलमोस्ट लास्ट 1.5-2 साल से बोल रहा हूँ आईटीसी के लिए, ठीक है। लेट्स सी वेयर इट कैन कम नाउ। आईटीसी में एफआईज हैव स्टार्टेड टेकिंग द एंट्री। ओके, लेट्स सी। आईटीसी का हम लॉन्ग टर्म से बोल रहे हो तो आप, हम वीकली चार्ट देखेंगे, डेली चार्ट नहीं देखेंगे, ठीक ना। वीकली चार्ट अगर आप देखोगे 312, 324, 324, 310 to 324, and further 350 to 360. These are the distribution zones. So right now we are sitting very close to the distribution zone. In case of the market comes down, you would see this script coming towards 275, 280 points or 290 points. That could be still entry points, right? From value perspective, there is a lot of value left out in ITC. मेरे ख्याल से 450 to 500 के टारगेट हमारे पास में ITC के लिए होने चाहिए, बट क्या इमीडिएटली आएगा? एज ऑफ नाउ, पहले ITC was not a preferred stock for FIS because of this SGS, right? तो वो एनवायरमेंटल जो उनके रूल्स होते हैं कि भाई इन टाइप के कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो वहाँ पे आईटीसी, बिकॉज इट इज मेकिंग सिगरेट्स, राइट, तो इट इज अ सिन गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर आल्सो इनटू पेपर बिजनेस, राइट। पेपर बिजनेस में मोस्टली वुड्स लगते हैं अभी एज ऑफ नाउ, तो आई थिंक देयर आर अदर सब्सटेंसेस दे आर यूजिंग फॉर मेकिंग द पेपर, बट so it was not qualifying. Now they have compromised in their standards of SES. So sorry, ESG. So what are they doing now? They are buying it, right? So as long as they buy, the price will hold. What is your view on Yes Bank? My good God, Yes Bank तो एक पहेली है, राइट। तो इसमें हम तो टेक्निकल भी नहीं देख सकते, फंडामेंटल भी नहीं देख सकते, बट Yes Bank will be having like how Yes Bank survived. Yes Bank
shares were bought by consortium of banks including State Bank, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, आरबीएल बैंक, ऑलमोस्ट सारे बैंक को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके शेयर्स चिपकाए थे, राइट। एंड एसबीआई के पास में सबसे ज्यादा शेयर है। नाउ लॉकिंग पीरियड आई थिंक मई या जून 23 में फिनिश होने वाला है। दैट मीन्स ऑल दोज पीपल हु बॉट द स्टॉक्स एट 10 रुपीज to keep Yes Bank afloat are allowed to sell those stocks, right? As of now, there's a binding, right? Lock-in period है 70, जिसमें भी अगर आपने 100 स्टॉक लिए तो आप 75 नहीं बेच सकते थे, 25 ही बेच सकते थे, right? तो ये all these people who have kept lot of stocks of Yes Bank, if they start selling, let's say 6 months down the line or 1 year, let's say 8-9 months, I think 8-9 months call logging period, whichever, what will happen? Let's say they bought the shares at 10 rupees, the market is at 15 rupees, they are making net 50% ROI at this point of time. Consider अगले 6 महीने 8 महीने में 10 महीने में रिटेलर्स एक काउंटर को लेके 20 रुपए तक लेके जाते, that means all these banks would have doubled their money, right? And we are not talking about small amounts, right? So what will happen at that point of time? You need to consider that. So long term मत सोचें Yes Bank का, unless until you are thinking about 3 years down the line. 3-4 साल में Yes Bank अच्छा सर्वाइव करेगा, अच्छे प्राइस पे आ जाएगा. If you are a momentum trader right now, around 13 रुपीज के आसपास में 14 रुपीज, सॉरी 12 to 13 रुपीज के आसपास में आप इसको बाई कर सकते हो. एंड आपका टारगेट, जो पहला टारगेट होना चाहिए, वो समवेयर अराउंड 20-25 के 20 पहला टारगेट, 25 का सेकंड टारगेट. जनरली मैं इन स्टॉक्स को नहीं फॉलो करता हूँ, बट ये स्टॉक ऐसा बहुत सालों से मैं फॉलो कर रहा हूँ Yes Bank, so that's where my discussion as well as thought process is firm about this bank, right? 10 रुपए 11 रुपए में मैंने भी वो टाइम पर जब भी 10 रुपीज की बिड हुई थी, we also bought and we sold it at 14 and a half rupees. Now no more in Yes Bank except in old stocks, old accounts, right? So that's my view about Yes Bank. So it's not for actually retailer फंसने वाले हैं, so avoid that counter for yourself. Zeal, let's say Zeal देखते हैं जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज, राइट. सुभाष चंद्र जी की कंपनी हुआ करती थी, नाउअडेज सोनी का बड़ा स्टेक है. Although Puneet Goenka, who's son of Subhash Chandra ji, is MD of it, for how long we do not know. But overall, media sector थोड़ा unpredictable है, and it's a different kind of play altogether. Momentum के हिसाब से 375 के लिए आप ट्रेड कर सकते हो, और 375 का मतलब आपको 35 पॉइंट के आसपास में यहाँ पे मिल सकता है, 200 मतलब 10-12% का. बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप फंडामेंटल देखोगे तो जी के फंडामेंटल की बैंड बजी पड़ी है. रील के फंडामेंटल की, लेट मी सी अगेन, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, आई हैव नॉट सीन. सो 2 टाइम्स ट्रेड कर रहा है, आरओसी 14%, आरओसी 15% है, आरओई 10% है, नॉट दैट बैड. ओके, प्रॉफिट 5 साल का -4%, सो इट्स टू बैड. माइनस में गया प्रॉफिट तो फिर कोई मतलब नहीं है. 1% का डिविडेंड देता है. पीजी रेशियो माइनस में. इफ हु हैज आस्क्ड दिस, मनीष टेडिया, राइट. मनीष, आप तो मेरे जीटीआई के स्टूडेंट हो, आपको गाना पता है जब पीजी माइनस में होता है कि भाई झोल जाल है, भाई सब झोल जाल है, तो छोड़ दो. इट्स नॉट वर्थ फोकसिंग ऑन. प्लेज है 5% की, और आप देखोगे प्रोमोटर भी काफी कम होंगे यहाँ पे. प्रोमोटर डेट नहीं, अच्छी चीज है. प्रोमोटर होल्डिंग इज ओनली 4%. सो माय बात नहीं, सब एफआईएस के पास में, अनलेस अंटिल सम स्ट्रांग एफआई कम्स, you can't look at long term future for this company, right? So मैं weekly basis पे बात कर रहा हूँ, weekly का chart देख रहा हूँ. So ये that means I'm talking about 6 months to 1 year view जब मैं weekly chart देख रहा हूँ. ठीक. स्माइल का सवाल है IOC, right? Let's see. Indian Oil Corporation. तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हमने बहुत लोअर लेवल पे कॉल दिया था इसका, राइट. ओके, ये भी स्प्लिट हुआ है 1.5 to 1 ऑन June 30. उसके बाद में प्राइसिंग रीवर्कआउट हुई है. एज ऑफ नाउ बुलिश ट्रेंड दिख रहा है.
अच्छा, कई लोग तो पीएसयू स्टॉक नहीं, बुलिश ट्रेंड भी टूट गया, राइट। सो मोमेंटम वाइज 92 के प्राइस के लिए, 90 के प्राइस के लिए आप ट्रेड कर सकते हो माइल, यहाँ पे 1.5 से 2 महीने का व्यूज रख के। और अगर आपको लंबे टाइम पे देखना है, ठीक है, तो ना आपको पता है कि अगर डीजल या क्रूड ऑयल की प्राइस ऊपर होती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मेंटेन करना है एक प्राइस। ऐसे में क्या होएगा, जो भी ऑयल से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, ऑयल से रिलेटेड दो टाइप के बिजनेसेस हैं, एक तो ऑयल रिफाइनिंग का बिजनेस है और दूसरा ऑयल मार्केटिंग का, राइट। सो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन क्या करती है, इनकी चेन है जिसको हम वैल्यू चेन बोलते हैं, राइट। तो ये मार्केटिंग कंपनी है। तो गवर्नमेंट बोलती है भाई प्राइस मत बढ़ाओ, इनको महंगे में खरीदना है, सस्ते में बेचना है, तो दे विल बी मेकिंग लॉस। बिकॉज ऑफ दैट नॉट ओनली आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, सबके प्राइस की पिटाई हुई है अच्छी खासी, राइट। तो क्या वक्त आ गया है इनको ऊपर जाने के लिए, इनके प्राइस में हाइक होने के लिए। टू सर्टेन एक्सटेंट ऑयल का प्राइस कम हो रहा है। वी सॉ इन लास्ट वीक ऑलमोस्ट 93 $94 तक भी आ गया था, ऑल्दो राइट नाउ इट इज $101 पर बैरल। आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्रेंट क्रूड, राइट। सो unless and until the oil goes below 80 और $70, ये कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली नहीं है। सो दैट मीन्स प्राइस पे इनका प्रेशर बना रहेगा, प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रेशर बना रहेगा। ऑन टॉप ऑफ दैट, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी, तो 10% के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनसे डिविडेंड मांगेगी मांगेगी ही मांगेगी, राइट। इसका डिविडेंड यील्ड देखोगे एट द प्राइस ऑफ 71 ऑल्सो इट्स ऑलमोस्ट 11.7%, राइट। सो अगर आपको 3-4 साल 5 साल के लिए रखना है तो येस डेफिनेटली इज अ गुड प्राइस, क्योंकि कुछ भी नहीं होगा, आपके बैंक से 2 टाइम्स तो डिविडेंड यील्ड आपको ये देते रहेंगे, राइट। सो आपको एक रेगुलर इनकम बनी रहेगी और थोड़ा 10-12%, 15% का भी इक्विटी में या आपके स्टॉक की प्राइस में, सो दैट्स आल्सो गुड एनफ, राइट। फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव यू कैन डेफिनेटली take a position. But if you are looking at the momentum in these government companies, oil marketing companies, जिनको ओएमसी भी बोलते हैं, राइट, इनमें बहुत ज्यादा स्कोप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है बिकॉज ऑफ द ऑयल प्राइसेस, राइट। So that's about it, right? So there is another company which is PFC. I got that question also. Let me ask, right? PFC. PFC is one more again a financing company, Power Finance Corporation of India, right? Again, a heavy dividend company, and यहाँ पे भी हमने काफी करेक्शन देखा था, राइट। ऑलमोस्ट 96 97 के ऊपर भी चला। ओवरऑल अगर आप ट्रेंड देखोगे वीकली बेसिस पे, तो हायर हाइज बनाए हैं, हायर लोज बनाए हैं, एंड यहाँ पे एक अच्छा रिवर्सल है 120 के प्राइस के लिए। सो 150 के प्राइस के लिए आप यहाँ पे 30 पॉइंट मतलब गुड ऑलमोस्ट 25-30% के आसपास में आपको यहाँ पे आरओआई है, राइट। ऑन टॉप ऑफ दैट आई एम श्योर पीएफसी ऑल्सो गिव्स मोर देन 10% का डिविडेंड, राइट। या 9.94, सो ऑलमोस्ट 10% का डिविडेंड देती है आपको पीएफसी। सो आप इसमें पोजीशन डेफिनेटली बना सकते हैं। अगेन डिस्क्लेमर, आई एम ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन पीएफसी, राइट। ऑलराइट, so now if you look from perspective of these the financing companies or sectors, there are certain sectors which have corrected a lot, like banks had corrected a lot. बैंक में काफी फियर आता है जब भी मार्केट डाउन साइड में जाती है या रिसेशन का टाइम आता है या बिजनेस में डी ग्रोथ हो रही होती है, राइट। सो दे आर द वंस विच आर ऑल्सो हैविंग अ वेरी good upside, right? So if you pick up a undervalued bank, that you can also get a good upside on that. So एक aspect है. Of course, consumption is a very good theme. IT and pharma as of now थोड़ा weak scenario है वहाँ पे, so थोड़ा careful रहिए वहाँ पे आप। बाकी का there is no issue. You can take your positions on the stock which are fundamentally strong and they are in a uptrend, right? So Praj Express का use कर सकते हैं, those of you who already know what is a Praj Express, वो point of view से आप यहाँ पे
पोजीशन बना सकते हैं। और जैसे ही आपका सुपर ट्रेंड आपको एग्जिट दिलाता है, आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, आप एग्जिट कर जाएं and flow that money into another stock, right? All right, friends. So I hope today's session might have given you a good view about the stocks, about the stock market, micro, macro scenario, as well as what's happening around, right? So you will take care of your health as well as wealth. With that expectation, I close today's session. विश यू हैप्पी वीकेंड। 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं। और अच्छा लॉन्ग वीकेंड है, सो आई इनवाइट यू टू डू अ ग्रेट स्टडी सच दैट यू कैन not only take care of your health but also wealth, right? Goodbye, good night.